Yeah. Hello. Good afternoon, everyone. On behalf of the Women Young Members Excellence Committee of ICAI, it is my pleasure to welcome you all to Yashaswini and Idol Series 83. Yashaswini and Idol is a Wednesday series of the programs conducted by uh, WYMEC for women CAs and by women CAs. This series is an extension of Sky High Symposium, which concluded its 100 episodes. It is one of the committee's initiatives to not only disseminate the information to women members on technical updation and non technical skills, but also to empower and inspire women members to come to forefront and realize their verbal skills at public forum. It gives me immense pleasure to declare that ICEI has come up with the CA Women Excellence Awards. So it is my earnest request to all the participants who have joined to kindly nominate yourself. This is the WYMEC is inviting nominations for these awards. It is an endeavor to honor and celebrate exceptional achievements and exemplary contributions of women members of the Institute. There are five award categories which you can go through the Sing Women Lifetime, Women Independent Director, Women of the Year, Women in CA Women in Social Awards, and CA Women Startup Awards. I think it's a huge opportunity and let's make the best out of it. May I now introduce our first speaker for the day, CA Meghna Jain. It gives me immense pleasure to introduce her. Meghna Jain is a chartered accountant and a senior wealth manager at Nuvama Wealth. Her specialization in financial, tax, retirement, and estate planning, offering strategic risk-based investment solutions. She is an NISM certified and passionate professional for market analysis. She focuses on delivering data-driven wealth strategies. Meghna ma'am, I welcome you here and hand over the mic to you for the rest of the session. Thank Thank you so you. much, Davada. Good afternoon, everyone. It's an absolute privilege to be a part of this inspiring initiative by the Women's and Young Members Excellence Committee. As chartered accountants, we are already great advisors related to financial or be it a taxation part. Today. I will be sharing the insights on the data-driven portfolio strategies. So, how as a woman we can change our portfolios in a different and strategical manner. That is my today's important thing. So let me share the document first. Just give me a minute. Is it visible, everyone? So yeah, let's go ahead. So today, to be honest, data-driven portfolio strategies is majorly for futures, options, and derivatives. So let us understand that as a woman and as a chartered accountant, we have multiple tasks to do. Like we are into business, or we are into practice, or we are into a salaried employee. So at that point of time, analyzing the portfolio is a major task, which is very much needed, but we are not able to do it because of lack of time. So let us understand how we can strategically and smartly handle our portfolio in an investment strategy. So I am today not going to tell you about the trading part where the futures, options, and derivatives will gonna be included, but I gonna be focusing more on the long-term portfolio management part, where how to use the AI and other strategies to enhance the returns with less risk. So let us start. This is let us take this as a chance. So first, let us understand that how much women are actually invested in the market. So you will be shocked to know that there are only 24.5% of the individual investors who are women nowadays. Can you imagine that our contribution is very less right now? Why? Because we have multiple jobs to do. First and the foremost thing is women go through multiple phases in the life, be it career breaks or be it other things. So we need to play very smart and strategically. We do not have to be dependent on other person for our portfolio management. So how we can do that? First thing, if you see data driven strategies, which removes the emotional decisions.
many a times how we choose a mutual fund, if I just give an example. So there are multiple things in equity, direct equity, mutual funds, international equity. But if I choose a very comfortable sort of investment, it's just mutual fund right now. So how we invest in one mutual fund, so we gonna see the returns, 1 year, 3 year, 5 year, 10 year returns, and then we will just do a very smart play. We will just filter out the returns, and then we see which is giving us the higher returns. But is it a right way? So answer is no. So how to how to use AI, how to use the data driven data information which is available in the market, which is available in the Google itself, but we are not able to use it in a proper way. Okay, so I will help you first part for the mutual fund part, but it will be with just 10% of my whole information. Second is, which is this session today, which I'm going to speak most of, it will be on structure products, which we are not much aware about. So I will be throwing a light on the structure products part and debt stability layer. Now, in our portfolio, if I see what is the ratio of equity to debt, it should be dependent on your risk appetite. It should be dependent on your lifestyle, your cash inflows, outflows. So I will be letting you know what should be the right allocation in equity and debt, so that we are not overly diversified, or we are not having the portfolio which is very risky. Okay. Gold is always a hedge product. But again, what is the smart goals? Today, we all know that SGBs are no more in the market. Primary SGBs are eliminated from the government side. So, what we should do to earn extra than the gold MCX? So I will let you know in the through the structure products how we can enhance our returns and generate the alpha over and above the market benchmarks. Let us proceed ahead. Now, if you see, first I'm covering MFs. So mutual fund, now if normal, as I already said, that what we look is towards the return, more and more maybe to the risk. But there are five major things which we have to look on. First is check for overlapping stocks to understand the actual diversification of portfolio. Now, what do you mean by overlapping stocks? So, for example, you have taken HDFC Midcap Opportunities Fund, or maybe Nippon Small and Midcap Opportunities Fund, or other large cap stocks. Okay. So, what happens is, just take an example of large cap where we have Reliance and Infosys. Now, if you see in direct equity portfolio, you all again possess Reliance and Infosys. In 5 to 6 mutual funds which you have already, again they have Reliance and Infosys. So at the end of a day, if I just accumulate all the stocks and mutual funds, your Reliance and Infosys have the major share of the portfolio. That means if something happens to that stock, your mutual fund gonna affect. Okay, so overlapping of stocks, how much is the real percentage in one company is the most important thing to understand. So how you can check it out? First thing, you can directly go to the chat GPT part. You can directly type that I want to understand, this is my portfolio, and I want to know what are the overlapping stocks to understand the diversification. Even there is one application website which majorly people use for the overlapping is Morningstar application. They have a very good AI data accumulation and an input plus output analysis. So you can use this part. Second, you have to always check alpha returns. First thing, if for example, benchmark that is Nifty 50 is giving me somewhat around 10-20%, and my portfolio is also giving me 10-20%, then the main question is why I am paying the expense ratio. So to avoid those things, I need to understand that what is the alpha. That means what I am earning over and above the benchmark. So you have to always analyze not the returns, but the alpha returns. Third part is comparing with the right benchmark. Many people always choose the wrong benchmark for the comparison when they do their own analysis. For example, if you are looking towards the mid cap stocks, so either you have to take Nifty mid cap 150, or Nifty 500 also is there. Nifty 50 we should compare, or Nifty 500 stocks we should compare. Nifty top 20 are also there. So there are multiple benchmarks. First, we need to understand that how to analyze the right benchmark. So, as we are not that much expert to understand that this fund is based on which benchmark, we need to check that on value research to understand the right benchmark. Fourth point is also in that.
Fund manager experience, we always check that whether the fund manager is experienced or not. But to be honest, it is always a secondary matter, because your peer comparison, your other things, is the major concern right now. So secondary part is fund manager comparison, and you can do again with the help of value research. Now to analyzing the stocks. For example, you have, as I said, in mutual funds, when you understand that there is a overlapping of one or two stocks, you just go to the screener AI. Now screener we all know, but there is screener AI when you take the premium, so you can get the summarization of on calls of one or two company. For example, in your portfolio, you have 30 to 40% devoted in a one stock, so you can understand that why I am taking that much risk. Of course, it's going to give me the returns, but what is the future? Future is only understood by the con call reports and by their order book size. If we understand that yes, the company is overvalued because of their higher order book which is not completed, so that makes sense. But if the overvaluation is just which is window dressed, then we have to look upon our portfolio again. This is all about the mutual funds right now. These five things, I am very sure that it's gonna help you for the other mutual fund category you can choose. Let's come on to the second thing. Now, this is just a knowledge part. It is very much shocking that today India is become a consumption hub. If you see a day in India, normally people in a day they order 42 lakh food deliveries. And if you see 50 plus crore people use UPI transactions. And then we say that India is not much capable of handling things, or India is cannot drive the market, or is India really we should invest in India or not? If I see this data, I think India 2030 story, which people say is very real. 59 crore GB data usage. 8.41 lakh domestic passengers means people never used flights that much in India. The middle class people were today in this time, people are using that. So that is means it's a shift, it's a change. And that change is again, if I see in women's contribution, it is just 20.5. Then we should again analyze and we should invest in such consumption funds. We should invest in stock markets, and with strategy, I think we can make good returns. So this is just for the knowledge part. Let us proceed ahead. Now, as I always, we know that being a chartered accountant, being a woman, being a mother, we don't have much time to give and devote to the portfolio, because portfolio at least need some time of your whole day. But if you do not have much time, let's skip all of this, whatever I have said right now. Let us skip and go to the structure products, because the alpha generation is the only thing where we are looking towards market. Or else, if we do not need alpha, we can directly go to the ETFs, we can directly go to the passive funds, we can directly go to the gold MCX bar or commodities. But we want more than that. We want more than FD. So, what should we do to eliminate our time to get more returns and to get the good alpha? Let us see. So, first, let us talk about the market. We have nifty structure products in the market right now. These are the three products which people do not know. Now, let us assume what are structure products. Let me first explain that. Structure product means a company or an industry, they will decide one benchmark, say Nifty 50. Nifty 50 as a benchmark, what I gonna give extra over and above the Nifty 50. So these three products are replication of that. Okay. First is Nifty Beta. So Nifty index, wherever I have written, is Nifty 50. Okay. Nifty 50, if giving you around 10% from today, this product says that if it gives 10%, we will be giving 150%. That is the Nifty Beauty. Matlab for one person, every one person, you will be getting 1.5x returns. So you can imagine for two, it's gonna be 1.1. It's like that. So this is the structure product. Now you're gonna see how it is happening. Why? First thing, SEBI doesn't allow us to guarantee anything in the market. That's why we are guaranteeing over and above the benchmark, because that is allowed. That is no, because it's market linked debentures. Okay. So 150% return in the Nifty Beta.
Second part, I know it is not understood right now, but we have multiple slides where it will be more easily covered. Second is Nifty Twin Win. Nifty Twin Win, what if I say you that either today market is very volatile and somebody says me that I cannot invest 10 lakh rupees right now. Come on, it's gonna make be 7 or 8 lakhs. Then what? Where is the principal protection? I would rather go for FD. But what if I say that either take FD returns or Nifty 50 returns, whichever is higher? That is something which is like absolutely amazing. And is there anything available in the market? So yes, Nifty Twinwin is the product. You can get an assured return of 22.69. Now, one point I have skipped here is this products have 3.5 years of lock-in. That means 22.69% is the compounded 3-year return. So I think maybe 6 to 7% it becomes if you just do the compounding calculation. Even if the Nifty remains flat or declines, that means zero risk. So opportunity cost loss is always there in the market. We will never take that as a risk. But something which is guaranteeing us the FD returns and market returns is something very great. So you can choose this part if you're a conservative investor. If, for example, you feel that you're a moderate investor, you can go towards the Nifty All Weather Equity, AWE, All Weather Equity. You can earn 50% flat if market goes 10% or on or above. For example, today if you invest 10 lakh rupees in the market, that is in Nifty 50 only, large cap. Everything is for large cap. So if you invest 10 lakhs, it goes to 10%. Nifty today is 24,000. If it goes to 10% more, so you will be getting 50% flat. Now, how of if for example it goes 70% then in 3.5 years, then too you will be getting 50% only. So this is kind of product. If you want to take more risk, you can choose Nifty Beta. That is for aggressive investors. Now let us, know this more in depth. So if you can see this, I have created one table. I hope it's, yeah. So today, if you have invested, this is the level 24,000. I have taken the base. I have assumed it. So today, Nifty returns is zero. Twin win, then too, you're gonna get 20.69% because either negative or sorry, either positive or either 22.69%. In Nifty Beta, you will not get anything, 0%. Okay. Now you have invested 1 lakh rupees. Twinwin will give you 122,690. Beta will give you 1 lakh rupees. And other thing will also give you 1 lakh rupees, AWE. Okay. Just imagine if it goes 10% in 3.5 years. And see, market actually people are, if you just read the news, so everyone is analyzing that in 3.5 years, market gonna rally. So we do not know how much it's gonna rally, but just assuming 10% also, because in 3.5 years, Nifty 50 can be 10%. So if it goes 10%, then to a Nifty twin when you're gonna get 20.69%. Nifty beta, 50% extra of 10%, 10 plus 50, that is 15%. And AWE flat 50%. So you can assume that how much you can make the returns. As I said, beta is giving you the good returns. That means a bit risk is there. What risk? It is not principal protected. If market goes down 20-30%, you're gonna have same loss which you will be bearing if you do not invest in this. Twin win, of course, there is no loss because there is a limit. And in all weather equity, best part is there is a principal protection. So this is something which is best for even conservative and aggressive, that is moderate person. So, but capping is there of 1,50,000. Plus, there is no loss. 10 lakhs becomes 10 lakhs only. Okay. I have given the example of 1 lakh because this product starts with 1 lakh rupees. Not below, but yeah, you can invest minimum 1 lakhs and can add up any product. Okay. This was the 3 products only in Nifty. What if you tell me that I want to invest in gold? But the thing is that gold is already reached at a level we will not invest. Any one of us will not invest right now because the price, right? But what if I say I have same thing in the gold also? Then I think you're gonna be interested. Let me show the same thing. But I have one more slide. If you guys have any more doubt, so let us just read it.
Nifty twin win, fixed returns plus upside market participation. Nifty beta, participation in Nifty with 1x risk. Nifty AWE, high participation product with principal product protection. If you see returns, 22.69%, 1.5x, as I mentioned, up to 50%. Upside, fixed return plus equity participation, only 150%, 5x of 10%. Principal protection, only in one product we do not have principal protection, that is Nifty Beta. Recommended only for aggressive investors. If you go ahead, return example, you can just have a look towards it. Best for investors seeking safety, investors with higher equity participation, and with a defined return safety. Market linked, yes, both are market links. This is best for the bullish markets, and this is for uncertain and sideways markets. Simplicity, fixed returns with simple market participation. This is straightforward leveraged Nifty participation, defined upside plus principal protection. Positioning, fixed income plus equity because we are providing FD returns also here. Here, only the Nifty exposure. Here, all weather Nifty shield with certainty. So you can just have this, have a look on this. You have any doubts, you can just ask me later. Okay, let's shift to other slide. That is gold product. As I mentioned that we have same thing in gold. Now, in gold beta, there in Nifty beta, I was providing 150%. Here we have 127% with a 100% increase in the Nifty index. Gold when we have 14.71% even if the gold MCX remains flat. So there it was 22.69%. Here it is 14.71%. Why? Because the gold is used as high hedging. So gold is a structure, commodity, and there the FD returns we cannot give higher. Okay, and gold AWE, there you can earn 52% absolute. There it was 50%. So if you see this again, 4% per annum, there it was 6%. 27%, there it was 50%. And here 52% absolute, there it was 50%. So again, you can have a look on this. If you have any doubt, you can just let me, you can just let me know. Okay. Okay. Now, problem is, let us identify where and why we should go for structured products. Why we should understand more on that part and why we should invest in that for the future. First part is 3.5 years thing. 3.5 years is a perfect lock-in period. Secondly, it offers market to have a proper time to increase the returns. Secondly, you are not in the short term or long term person. Here it is over slab. The returns are on slab. That means if you have someone who are under the slab in your family or something, you can directly go take this product on their name and save all the taxes, right? Now, let us assume Nifty has given 40% return. So FD gonna give you 7% only. Mutual funds has given 38%. Equity stocks 45% because that is direct stocks. But beta has given 60%. As I said, it is for aggressive investors. Twin Win has given 40% return. And AW, same as Nifty. Twin Win will give same as Nifty. Or if it is less than, if it is 20%, it will give 22.69% flat. AWE, 40% to 50% you want to get. So if you take a combination of these three, I think that is something where you just don't have to see anything. You have invested today, just see after 3.5 years, and then you're gonna get those returns. Beta, for the alpha part, we do not have to do any strategies. There is no fund managers, there is no hidden cost. First and the foremost thing, zero expense ratio. Can you imagine this? So yeah, in the negative part also, if you see, only beta possesses the risk, rest all either 0% or 22.69%. So this was the structure products till now. I hope that everyone have understood this product. Structure products is not just giving you the returns, but it is also saving us the taxes. And we as a chartered accountant, we know that where should we invest so that we can save our taxes. Now, this is not just for you. Even as a chartered accountant, we have a responsibility towards our customers, clients. So we can directly, even tell them, give them the information that there is something in the market which is apart from FD mutual funds and direct equity.
There is no AI required in these kind of products because we have less time. If you have a good time, you can directly go for the other parts, as I mentioned, in mutual funds. PMS, AIF, also we have that strategies to understand. But to be honest, PMS and AIF is not for the someone who is just starting the market. Here you can invest 1 lakh rupees. In PMS, it is straightforward 50 lakh rupees. And in AIF, it is straightforward 1 CR. Of course, there might be a multiple option of SIPs and AIF, but of course, again, we have the restrictions, right? So let us now talk about the FDs. Somebody who is looking for less than 3.5 years, somebody who is looking for just 1 to 2 year or maybe 3 years, and even some is looking for 10 years. FDs can be replaced by corporate FDs only and only if the paper has good credit risk, the stability, and we should analyze about the company as well. Next slide is for that. Corporate FDs, if you invest, you can get around 11 to 12% also. I have seen 13% also, but with triple B rating. So you have to always check that what is the good credit rating. Always remember one thing, if the credit rating is less, the return is going to be very high because it is risky. If it is 11% at AA rating, I think it's amazing. Okay. So the credit rating possess multiple things, and we have already discussed that whether the paper gonna default or not. So there are multiple papers available. First, state corporate FDs, bonds are also available in the market, and plus normal corporate FDs, like for example, Tata Corporate FD, Samman Capital. So these all are the FDs available in the market. What you gonna get? Why we should take corporate FDs as a paper? Why should we invest in a debt in our portfolio in corporate FDs and why not FDs? First thing, FD taxation. Matlab, of course, corporate FDs again have same taxation, but the problem is that in corporate FDs, if again your slabs is not there, so it is taxable as slab because it is NCDs. So we are not talking about the secondary market if corporate FDs. We are talking about the NCDs, that is the primary market of corporate FDs. Okay, so there the taxation is as per slabs, and in FD there is no such thing of deferred taxation. TDS is deducted as you go with the interest. So here you can take the interest, but the TDS is gonna deduct in a proper manner. Okay, it's deducted as per slab. So if there is no slab, there is no deduction, right? So corporate FDs, to be honest, allocation we have to look on. So if, for example, you already have 70% of allocation in equity, so you should have a thought that how and why we should go for 30% in debt. Now, again, this ratio depends on the person to person with the risk appetite. So allocation again, why we should allocate in multiple things. Now let us talk about the diversification part. There are many people here also, and maybe what I have seen or till now is they do not realize that either diversification and allocation, why it is so important. First thing, we since 2024 September, market is going down. It is corrected, and it has corrected. That means mid cap and small cap who were giving good returns are actually have a major correction. Right now, if for example, you have not invested in multiple items and multiple proper diversification, if you have not done, then and if you need the money right now, how you gonna take out the equity part in losses? That is why the diversification is very important. So if, for example, you invest in such corporate FDs or in such structure products which gonna mature in 3.5 years or mature in 2 years, so you can get something which is fixed. Apart from equity and mutual funds, you should have something which is fixed. That is what I feel personally. And for example, if you ask me that how much allocation we should have so that our portfolios are properly diversified. Now, if you take mutual funds or maybe equity, you should go more on small cap and mid cap. Why? Because if you are choosing structure products, it is majorly on the large cap segment.
So you can have a portion of it from the structure products. Structure products give the large cap plus best returns, so you're getting the more alpha in there. And mid cap and small cap, again, we know that how risky and how good returns we can make there. So these we can play smartly. And large cap, if you're doing, so go as per your risk appetite and your cash inflows and outflows. So, for example, if you have some goal which is coming in 3.5 years or maybe 2 years, so you should have a mind that I cannot invest in structured products because if my goal is in 2 years, I will not get the money. So, we have to look upon various segments. People, why do not invest in this segment is because of the liquidity part. They feel that if it is illiquid, then how can we do the things? But have we ever imagined that we do NPS? Now, many people do NPS, but it is not all liquid. And what we are saving is not that much. What does ATD gives us, right? So, of course, NPS can be a part, other thing. But if you go for the equity part, then we can have various segments. People also ask me about the ELSS part, that whether we should go for mutual fund ELSs or tax saver funds or not. So, yeah, they should go, of course, but only looking upon the returns and plus the alpha generation on the benchmark. Because many of the ELSs are not able to provide the or beat the benchmark. That is the major thing which we need to look. Second thing is, if you see the mutual funds who are giving more returns. Is it good always? So it is not good, to be honest, because if somebody is providing you the more returns, you have to analyze it very deeply. For example, I will just take a name, and that is purely my opinion. So if you see quant mutual funds, when Adani was in the things, so at that time, if you see the quant was very volatile. Of course, it had given him very phenomenal returns. But if you had not analyzed it properly, then at that point of time, we might face heavy losses. So you always have to check whether you are aggressive investor or not. I have seen many people who are very aggressive and they will never leave quant mutual funds or quant part. And not just quant, even if you see Nippon is also doing very good. If you see Motilal Founders portfolio, that is also doing amazing. So at that point of time, we need to analyze if somebody is giving the good or better returns unexpectedly. Then, whether this corporate FDs is giving us anytime losses or not. Of course, yes. Credit rating, of course, that's the one part, but it doesn't eliminate the whole risk. So, for example, credit rating, if the risky paper is 80% risky, your credit rating helps it to reduce and make it at 10% risk. So the 10% risk will of course always be there. And that is of maybe the company gets bankrupt or maybe any other circumstances happens. So at that time, you always have to check whether this paper is asset backed or not. If it is asset backed, then we do not have any problem. If, for example, in structured products, it is purely asset backed. Anything happens, there is whatever is written is as per the SEBI gonna help and give the returns back plus principal. In corporate FDs also, you have to always check it. So there is some checkpoints which we have to ensure while investing in corporate FDs. So, so that's it from my side. If you have any questions, or I know it has been very much fast. So anything which you want to know, let us give the question and answers more time if you're okay with that. Can we do that, Shweta? Uh, Hi, Magnaji. Thank you so much for giving us such a wonderful idea on how to manage our portfolio Thank and you. where we can invest and all that. And I'm Sia Anuswar. So I'll be taking question answers which we have received from everyone. Sure. So we have some questions, like we received one from Chandni Shah, Mumbai, and she wanted to know whether this is a live session or recorded. So Chandni, this is a live session. Okay. Second, we have from Vibhuti Chandres. She's from Mumbai. And she wanted to know from you through whom we can invest in this structured product, and we can directly also invest. Yeah. Sorry, what was the name?
Vibhuti. Okay. Hi. So yeah, you can, first of all, it is not listed. Structure products are not usually listed thing. So you can, it is not available readily in the market. But you can either go for Anandarati, Novama. We also have this product. Third, ICICI Bank, ICICI Direct, which is their securities. They provide these things. And Bajaj Finserv is also the company where you can get these products. Every company has their own like situations. I have just shared a few of them where you can just understand the structure products. So everyone have their own criteria. Just for example, I have said 127%, they might say 130% or 120% like that. So yeah, these are the 4 5 companies you can just go and directly talk to them. Thank you. Okay. Now we have one from Trivandrum, Subharakshmi, and saying thank you, Meghnaji. That's insightful. And she wanted to know what would be your advice be for self-investment for our own purpose. Self-investment for your purpose. Yeah, First thing, own. yeah, that's a good question. So yeah, you always have to make a goal sheet. What I do for my clients is I analyze their goals. For example, if you have a goal of 2 years, 3 years to buy a property or to for your child or something like that. So you just have to go and draw an Excel sheet where you understand that this goal is for 3 years or 5 years time frame, and then invest in such investments which is for that time frame so that there is no liquidity crunch. I have seen many people who do the loan recycle or who do the this one investment gets over, you just pay for that other investment. So this cycle is a vicious circle. You should not involve in that and prepare for the goals, align them with the cash inflows and outflows, and then you're good to go for the investments. Thank you. Okay, thanks. So another questions we have from Sally Thakur. She's from Sindhu Turk. And she Okay. wanted to know how and where to invest for the structural product. Yeah. So I think I have already mentioned this, how to invest. So see, it's very simple. There is no much process. If, for example, you already have a demat account, because see, people gonna say you that to open a demat account. But if you do not want to, there is again an option. You just have to give a CML copy, your normal KYC, and then you can just give a consent that whatever is written is actually you're getting that or not on mail. And then once you do the consent, you just have to do the payment, and then within 7 days or 10 days it gonna well, you can see it in your demat account. Always remember, beat any investment, there is always well, it gonna always come in the demat account. There is no such investment in the market which cannot come in the this demat account. So physical format of investments are no more SEBI regulated. So it will, this structure products will definitely come to your demat account, even the corporate FDs also. So yeah. And from Okay. where I've already said that. Thank you. Okay. So we have another one from Ritu Jain. She's from Bangalore. And she wanted to know, suggest some mutual funds where we can invest. Uh, sure, Ritu. But you have to connect me personally because I cannot recommend the name of the mutual fund. But yes, I can just say that if you're looking for small cap or mid cap, be very cautious right now because market is into correction. So you have to look that what is the entry point and the exit point. But yeah, you definitely can connect me after that. Everyone, you can just have my number from here. So you can connect me after the session, no problem. Thank you. Okay. So now we have the questions from Vibhuti, which just you have answered. She also wanted to know the tax implications for the structural product. See, tax implication for structure product is tax as per slab. So structure product is, we have already studied that it is like MLDs only. So you just have to ensure that what is the tax slab. If, for example, you are into the bracket of 30%, you will straightforward get the 30% taxation of the returns. So I would always recommend people that if, for example, you're going for the structure products, go for that person in your family or maybe some person where the slab is not there, and then you can invest in their name. That is a strategy. But if you feel that I have like good amount of money and the tax is not a issue, then you can proceed ahead with that. Thank you.
Another one we have from Bangalore, Jayashree Devanand. She wants Yes. to know, yeah, how is corporate FD beneficial over the FD apart from the return aspects? Yes. First thing, returns is the major aspect of the corporate FDs. But in FDs, you're investing in bank. Like one bank is there where you're keeping your money and you're getting the returns, right? But in this, you have a chance of multiple people. So how corporate FDs work, let me make you understand first. If, for example, you have 10 lakh rupees, you want to invest Tata company or maybe any other company. So as a debt format. So there is no other thing where you can do, but the corporate entities can help you to do that. So they particularly take borrowings from the people, so you can invest in that. So you can get a multiple exposure, and just having one bank FD is, I think, better to go with the corporate FDs, multiple but with a good credit rating. That is the thing. Yeah. Okay. So anything else you want to tell from my side? These are the questions we had. So Yes. Uh, sure. Thank you, Anu. I think we have some time, so I can highlight some other things as well. If you give me sure, the chance, Anu. Yeah. sure, sure, Just sure, let me know, Anu, that when the time is over. Thank you. sure. Yeah. Yeah, Everyone, you can just note this, have a screenshot, and I think they will be sharing too. So let us discuss on some other investments, because I have just covered two investments right now, structure products and the this part. People also ask me that whether the cryptocurrencies which is there available in the market, whether we should invest in that or not. See, every time there is a proportion in our investment. It is a rule, okay? For example, you have around 10 here and you want to invest 10 lakhs in cryptocurrencies, then there is a no issue. You can just, have that risk and check it out. But to be honest, risk is, it's like, you have donated someone. Cryptocurrencies are exactly like that. So you do not expect anything as a return. Either it can go 500%, either it can go zero. So many times people have the question in the mind that, come on, somebody is getting 500%, why should not I? But somebody is also going negative. So we always have to take care about that. Second thing is cryptocurrencies and unlisted shares. I will really highlight the unlisted shares. Many of us are looking towards, of course, we want higher returns than the market, than other things. So unlisted shares is something which is really attractive, and I think it has become attractive since 2021. So if, for example, you're, thinking about that, first point is always from where to buy again. Always remember that you should just go to the Google and directly type top 10 wealth companies or top 20 wealth companies. Those wealth companies will surely have the unlisted shares with them. Always remember it is SEBI registered company. Then only go proceed ahead with them, because no one will recommend you for this unlisted shares. Unlisted shares price is not at all regulated. If you, I can just give you some examples. First thing, if you have seen Tata Capital. So people had bought it at 900 also, at 1000 rupees also. But once it has been into IPO and got listed, at that point of time, its price was just 250 to 300. So you can imagine the risk. But now let me show you the bright side also. So if you see, let us take an example of SBI unlisted. Okay. So before 2 years, it was just 1000 rupees. Today, it is 2780 rupees. So you can imagine that within 2 years, people have also earned 200 to 300%. So we should always, check that how is the company. If I say about NSC, NCDEX, there are many unlisted shares in the market. But always remember the few checkpoints which you have to check while proceeding ahead. First thing, your risk appetite should be very good, because it's again 70-30, like 70% risk and 30%, of course, gonna get the return. Okay. Second, if any time you face losses in the unlisted shares and the company is very good, like Tata, as I said, Pine Labs, Pine Labs is also the company which is listed at a very low price.
So always remember, if the company is fundamentally very good, then you have to wait for the right time. Today, if you see, it's not the right time at all. And what we are expecting till 2026, I'm not seeing any right time right now in the market. Because market is not just correcting, but it has been impacted by the macro factors more, and majorly by the FIIs. So yeah, you have to take care of these things while investing in the unlisted shares. Again, unlisted shares is taxable at slab. So I have seen many people who have got around multiple huge returns, and then they were very happy. After that, when taxation comes into the picture, the reality is different. So go with unlisted shares only with the approved partners, and always check. Matlab, go on the Google, and there is unlisted zone where you can check the valuation. Is it highly valued or less valued? Always check the PE ratio as well, because PE ratio is again, matlab, when you compare it with the peers. So you can have a look that, for example, peer might have 26 PE, and in unlisted it is showing same peer at 46 PE. So that's a sign that it's a highly valued stock. So it happened with us in the, few of shares. So we always recommend our clients that you should be very much protective towards it. And I would also recommend you all. Being a woman, I think you should explore all the things. And for example, if you have 10 lakh rupees, or maybe 2 lakh rupees also, 10% of it, if you invest somewhere, you get an idea how it works. So have multiple products in the portfolio. And right now, people say that in commodities are also we are very interested. As a woman, I think we love this jewelry, gold jewelry. If something comes, let's take gold jewelry. If we want to invest somewhere, let's take gold jewelry. But is it the right approach? I'm not talking about the structure products, it's over. But yeah, while coming to the jewelry part, first thing, I am into financial planning as a total. You have to plan accordingly if you're buying that jewelry. Whether you ever sell that, is it really an investment property? The answer is really no. Because we Indians are emotionally connected with the gold jewelries or gold coins. We will rarely sell it. And chalo, gold coins, so we can sell it. But that gold jewelries, I don't think so that we can easily. So the liquidity part is same. There is illiquid. It is an illiquid asset. Of course, it's an asset at the bad times and very bad. Even at the bad times, I think we can survive. We can do multiple things, but we will not sell those jewelries. But at the very worst time, we will sell. Just imagine the making charges we are giving in that product. The like investments which is growing, if you do not book the profit, it is opportunity cost loss. That's high. Right now, gold is at a very high price. If, for example, it's an investment, you should sell that, book the profit, invest again. The cycle, money rotation is very important. But are we doing this? No. Answer is again no. So you should either go with digital gold, not digital gold, to be honest. Currently, there are many news that people are not keeping the collaterals for the gold. So you can go for ETFs or structure products or any other things if you're looking for the investment. And if there is no investment, then you can proceed ahead with the jewelry or anything. So that is something. If I talk about silver, yeah, whether silver or gold, there is always comparison that what we should do. Silver is something which is not just used as ornaments or maybe utensils. It is also more of the corporate usage. If you see solar panels, right now, solar panels has become a huge success. If you see the tier 2 cities, people are using very high the solar panels. So in solar panels, the glass formation, it needs silver lining compulsory. So if you see that silver lining, that silver is growing. And if you compare with gold, gold has reached, if for example, 50%, it has given 70%. Again, if you see other commodity, that is platinum. We rarely use it as an ornament or anything, but its value is again tremendous. So commodity
I am not talking about the traders. They are not into this picture any of time. But I'm just talking about the investment part. You can take silver coins and make as an investment for SIP. Like do take 5,000 rupees, go to the silver shop, have it. We do the SIPs in mutual funds. Let's do SIP in silver, just silver. Because gold is something which we definitely take it, and in Dhanteras, so we are Indians. We take it anytime when we want, right? So yeah, silver is also the very good investment right now. Other investments, like I have multiple things to talk. I hope Anumam will stop me. Yeah. So yes, you want to speak, Anumam? Yes, now we have got another couple of questions. So let Okay, me just go through with that. sure, sure. Two questions we have from Subarakshmi Trivendra. One is how Yes. are structured product differ from FMPS? Sorry, How are structured products differ from FMPS? FMPS. Can I just Yeah. get the? Can you just type what is FMPS? Mm, let her get back. Her another question Sure. is can OCIS and NRIS investment is in unlisted shares? NRIs Unlisted. can invest in, yeah, Oh NRIs no can no invest in no unlisted shares. no no. NRIs cannot invest in unlisted, not even in structured products. So there is no, matlab right now, there is no opportunity. But you can invest in direct stocks and mutual fund even through Gift City. Matlab, it's going crazy. Even AIFs and PMS NRIs can invest. So there are Ah, multiple segments. Yeah. Yes. okay. What about OCI? Yes, OCIs. So no, to be honest, the answer is no. For no, not even, well, only Indian citizens can invest in these products. No other person. Not even one person company or partnership firms or any person. Only residential individual of India. That's it. Okay. Yes. Yeah. She has written FMP is fixed mutual products, Fixed fixed maturity plans. maturity products. Okay, okay, okay. See, FMPs are government-based products. It's not some company-based products. This structure product is company-based product. FMP is basically NFO. It's new fund offer. Okay. So you can directly invest it through it. Yeah. Yes. Okay. And we have another from Barkha Agarwal, Hyderabad. So she wants to know, is it a good strategy to invest in a gold EFT monthly SIP, say, of rupees 20,000 for 3 years? See, if for example it is 3 years, I already have given 3.5 years good product. Gold ETFs is actually investing in the benchmark of gold MCX. So if you're getting something good over the gold MCX, I think you should go with the structure product more because your time frame is 3.5 years. If you're looking for 1 year or 2 year, you can go with the this. But yes, second thing is you are doing SIPs. For SIPs, of course, you have to go for ETFs only then because this product has a lump sum investment for one time lump sum investment starting from 1 lakh rupees. So if you can change your option from SIPs to lump sum, you can choose structure products. If not, then you can do ETFs. Okay. And we have another question again from Hyderabad, Neha. She wanted to know his investigation in physical silver better or silver securities. Uh, See, to be honest now, it depends again. But I feel personally ke if you can buy coins, I think that's more good. But if, again, how to keep it and save safety. It's all about safety because at the end of the day, price is same. In coins, you do not have making charges much, and actually nil also sometimes because they already have prepared multiple coins. So it is not they do not charge making charges easily. And again, you should have a good contact of the gold jewelry person who can give you directly in regularly, right? So yeah, it depends again. For like returns wise, same, similar. There is no changes because
ETFs is a passive income. So there is no expense ratio much. So yeah. Okay, we have question again from Subharakshmi. This is telling if OCIs, like overseas citizens of India, they are hold residence in India for a wrong time. So whether they can invest in unlisted shares. As per the Income Tax and Banking Regulation Act, if you are not an NRI, so you can invest. Simple. Because see, structured products and this unlisted shares, they do not actually give us the NRI the chance to invest here. So you can again take some from some, because I understand you want from NRE or NRO account, but these kind of investments are not available for them. You can only do mutual funds and equity segment. That too, if you do gift city from gift city, the taxation will be good. But if not, then too there are NRI options available. And again, it depends whether you're from Canada, USA, because the FEMA rules is very different for them. So that yeah. I hope it will be clear because you have given a very nice explanations. Thank you. And there is no more questions, which is Okay. there. Let's wait for a minute. Then Sure. we can. Yeah. If anything else is coming. Sure. No problem. No, we have not received any questions. So, No Meghna, problem. really, it's a very interactive sessions, and Thank you so much. you have given a very insight details about the structured and unstructured shares, how we can invest in everything. And thank you so much. Now I will just Thank you so much. call Khushbu Mehta to take over the session. Yeah, thank you, Shweta. Thank you, Meghna, for very insightful details. I'm delighted to introduce our next participant, CA Vrinda Vakharia. CA Vrinda is a distinguished chartered accountant and a partner at a leading firm. With a deep passion for training, mentorship, and motivational speaking, CA Vrinda is a certified professional under Parikshit Jobanputra's Train the Trainer program and Bada Business. Vrinda actively contributes to knowledge sharing through lectures, ICAI sessions, and her digital platform, Vrinda Speaks, which inspires a lot of professionals and students as well. We would like to extend a very warm welcome to C. Vrinda Vakharia to present an insightful session on mindfulness, your untapped professional capital. Vrinda, over to you. Yes, thank you. Thank you so much, Ms. Khushbu. I'm sharing my screen. Yeah, is it visible? Yeah, thank you so much. A very good afternoon to all the present here. Myself, C. Vrinda Vakharia. I'm chairperson of Baruch branch, leading my Baruch branch, and I'm very much interested in non-technical topics. So my today's topic is mindfulness, your untapped professional capital, a capital that requires neither investment nor statutory registration. Because हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जब बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में वही चलता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होगा, पैसों की बात कैसी होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी, यही सारे टर्म्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं कहीं ना कहीं. A capital that strengthens the judgments, clarity, resilience, and equilibrium between work, family, and self. जितने भी सीए मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इफ यू आर वुमेन सीए, तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से, अपने फैमिली से कि आप तो मुझे टाइम ही नहीं दे पा रहे हो. एम आई राइट? सो ये एक कंप्लेन होती है, क्योंकि जब हम ट्राई करते हैं हमारे प्रोफेशनल काम को मर्ज करने की विथ अवर फैमिली, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारा बैलेंस करने की जरूरत होती है. वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, दैट रिक्वायर्स मच प्रैक्टिस. और
वो करने में कहीं ना कहीं हम या तो प्रोफेशन को खोते हैं या तो हमारी फैमिली, बच्चों का जो चाइल्डहुडनेस होता है वो कभी कभी हम मिस करते हैं। तो उसको हमें कैसे बैलेंस करना चाहिए, दैट टू विथ माइंडफुलनेस। मन हमारा वहीं रहना चाहिए जहां हम जो करते हैं। तो ये आज का मैसेज रहेगा। लेट्स गो फॉरवर्ड। माइंडफुलनेस। लेट्स स्टार्ट विथ अ स्टोरी ऑफ मिस्टर मोहन दीक्षित। अभी उदयपुर का वेडिंग चल रहा है, बहुत ही फेमस हो चुका है, एकदम हर जगह सोशल मीडिया पे वही छाया हुआ है, और उसमें माधुरी दीक्षित जी का परफॉर्मेंस, तो वहीं से नाम मैंने लिया है मिस्टर मोहन दीक्षित। उनके बैकग्राउंड की बात करें, ही इज 42 years old, was born and brought up in Lucknow, graduated from Birla Institute of Technology and Science, Pilani, Rajasthan, with specialization in mechanical engineering। तो मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 42 years old एक मैन है जो बहुत सक्सेसफुल है आज की तारीख में, ग्रेजुएटेड है। ही मूव्ड टू बेंगलोर एंड स्टार्टेड करियर एज मैनेजमेंट ट्रेनी एट जनरल मोटर्स। तो मतलब एक अच्छी खासी कंपनी है, वहां पर करियर भी शुरू हो चुका है। एक्सेल्ड एट हिज इंजीनियरिंग जॉब एंड वाज गिवन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन विद इन जस्ट फर्स्ट 2 years ऑफ ज्वाइनिंग। इसका मतलब यह है कि ही वॉज डूइंग गुड, है ना, उनका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट जा रहा था, तभी तो उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिल गया। After about 5 years, he received an offer letter from MNC at Munich, Germany, as senior marketing manager। यहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जर्मनी मूव होने की एज अ सीनियर मैनेजर। Got married with Maya and settled in Noida, today having one beautiful daughter named Priya, around 5th to 6th grade daughter. During a span of 11 years, he became regional marketing head, then assistant VP marketing, and now he is head of sales and marketing। सो ये एक स्टोरी, और मिस्टर मोहन दीक्षित का बैकग्राउंड देखकर हम समझ सकते हैं कि अच्छी खासी उन्होंने पढ़ाई की है, अच्छी खासी जॉब एज अ करियर मैनेजमेंट शुरू किया, और फिर इंजीनियर के तौर पर सीनियर मैनेजर, देन ही बिकम रीजनल मार्केटिंग हेड, देन वीपी मार्केटिंग, और अभी हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, फुल डिपार्टमेंट के वो हेड बन चुके हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ही इज, वी कैन से, अ सक्सेसफुल मैन। Then one day he awoke with restless state of mind। अभी स्टेट ऑफ माइंड उनका क्या है? ओ गॉड, इट्स ऑलरेडी 8:30 AM, सॉरी इट्स ऑलरेडी 6:30 AM, आई एम लेट अगेन। जैसे ही हम उठते हैं, ये थॉट माइंड में आया, ओ गॉड आई एम लेट अगेन। मतलब कि आपका दिन आप एक नेगेटिव थॉट से शुरू कर रहे हो। Thank you, God. Yeah, wow, so very nice morning. I'm so grateful for this morning। ये कुछ भी थॉट नहीं आया, बट क्या थॉट आया? ओ गॉड, इट्स ऑलरेडी 6:30 AM एंड आई एम लेट अगेन। हैविंग, अभी ये थॉट उन्हें आया क्यों? बिकॉज ही हैज हैविंग important मीटिंग टुडे एट 10 AM कंसर्निंग डिक्रीज ऑफ मार्केट शेयर बाय 4% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। जिस कंपनी में वो हेड है, उस कंपनी का मार्केट शेयर 4% से डाउन हुआ है लास्ट ईयर से अगर कंपेयर की जाए, तो उसी को चलते उनकी आज एक मीटिंग है। He had tossed and turned till 2 AM thinking about his presentation। आज जो मीटिंग थी उसी के बारे में सोचते हुए, प्रेजेंटेशंस बनाते बनाते उनको रात के 2 बज चुके थे। मतलब कि वो 2 बजे हार्डली सो पाए, और फिर सुबह जल्दी उठना था, तो दैट वाज नेचुरल कि वो तुरंत उठ नहीं पाते। तो जबकि उन्हें 5:30 बजे उठना था, वो 6:30 बजे तक उठ पाए। अगेन नेक्स्ट थॉट, व्हाट एन इडियट आई एम, why did I involve my team in preparing marketing strategy? You just focus on the thought process of this man। एक तो हमने बैकग्राउंड देख लिया, ही इज वेरी सक्सेसफुल पर्सन, अच्छी खासी पढ़ाई की है, मैरिड है, अच्छी डॉटर है जो 5th या 6th ग्रेड में पढ़ती है, हेड पोजीशन पर है। तो मतलब एक नॉर्मल इंसान को इससे ज्यादा क्या चाहिए? बट फिर भी कहीं ना कहीं ही इज नॉट फीलिंग हैप्पी। कहीं ना कहीं उनकी मेंटल पोजीशन वो जो है वो स्ट्रेस में है, एंड वो खुद को ही बोलते हैं व्हाट एन इडियट आई एम। अगेन अ नेगेटिव थॉट, खुद को ही हम इडियट बोलते हैं। कभी कभी हमारे साथ भी ये होता है, मैं कितनी पागल हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये थॉट हम हमारे माइंड में लाते हैं और वो रिपीट होता जाता है। व्हाई डिड आई इन्वॉल्व माई टीम इन प्रिपेयरिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इस सेंटेंस को लेकर एज अ सीए मैं आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट करूंगी।
He was walking around, took bath, and at a dining table with tensed mind. What will be the management? What will management think of me? लोग क्या सोचेंगे? सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, है ना? तो लोग क्या सोचेंगे, वैसे ही मिस्टर दीक्षित भी सोचते हैं कि मेरी जो मैनेजमेंट टीम है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, कि 4% से कैसे हमारा सेल्स डिक्रीज हो गया। तो ये पूरा जो बैकग्राउंड देकर मैंने आपको एक अर्ली मॉर्निंग की जो मेंटल पोजीशन है मिस्टर मोहन दीक्षित की, वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। सबसे पहले वो उठते हैं, ओ गॉड आई एम लेट अगेन। लेट अगेन मतलब कि माइंड को आप ऑर्डर दे रहे हो कि आप हर रोज लेट होते हो और आज भी आप लेट हो। तो मतलब आपका माइंड इज ओके कि हाँ, ये तो रोज ही लेट उठता है, सो नथिंग न्यू। सेकेंड ऑर्डर आपने दिया, व्हाट एन इडियट आई एम। आप खुद को ही नेगेटिव थॉट दे रहे हो, आप खुद को ही इडियट बुला रहे हो। और फिर थर्ड आता है, व्हाट विल माय मैनेजमेंट थिंक ऑफ मी। मेरा मैनेजमेंट, मेरा स्टाफ, मेरे ऊपर के जो लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो यही सब सोच सोचकर हम अपना जो काम है वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करते हैं। अभी मिस्टर मोहन दीक्षित डाइनिंग टेबल पर है, उनकी वाइफ माया उनके साथ उनका जो कन्वर्सेशन होता है वो हम देखते हैं। माया जी कहती है, कैन यू ड्रॉप प्रिया टू हर स्कूल टुडे? द स्कूल वैन जस्ट कॉल्ड अप टू से ही कुडंट कम बिकॉज ऑफ ट्रैफिक ड्यू टू एक्सीडेंट। वो पूछते हैं कि आप छोड़ दोगे प्रिया को उसकी स्कूल? दीक्षित, नो आई कांट गो, आई एम लिविंग फॉर ऑफिस राइट नाउ। Maya says, it's Saturday today. Can't you drop her and then go to office? Dikshit said, not possible, please. Maya said, she was surprised with the speed he was eating. Mr. Dikshit जिस स्पीड से ब्रेकफास्ट ले रहे थे, she was surprised और वो पूछती है, how's the breakfast? Hope you liked it. मिस्टर दीक्षित बस वही खाना खाते खाते उनकी लैपटॉप स्क्रीन पर उनका ध्यान है, बिजी ऑन द लैपटॉप स्क्रीन। या इट्स फाइन, एकदम ग्रेजुअली जवाब देते, या इट्स फाइन। माया सेड, डू यू इवन रियलाइज व्हाट इज इन ब्रेकफास्ट दैट यू ईटिंग? अब इफ यू आर स्पाउस, आप भी समझ सकते हो कि आप कॉन्स्टेंटली अपने स्टाफ से बात करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए। डू यू इवन रियलाइज व्हाट इज इन ब्रेकफास्ट? तो यहाँ पर मिस्टर मोहन दीक्षित की जो वाइफ है, तो वो भी अभी गुस्से की पोजीशन में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है, उनको उनका माइंड स्टेट भी बिगड़ रहा है। दीक्षित बोलते हैं, वो जवाब एक्सपेक्ट कर रही है, बट मिस्टर दीक्षित काम में है, उनका माइंड काम में है। माया सेड, यू नेवर पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टॉकिंग। दीक्षित सेड, व्हाई डू यू ऑलवेज कंप्लेन? तो ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होती है झगड़े की। मिस्टर दीक्षित के माइंड में उनका प्रेजेंटेशन था, उनका काम था, उनका टेंशन था, जॉब का टेंशन, काम का प्रेशर, ये सब उनके माइंड में चल रहा था। माया जी के माइंड में था कि उनकी बेटी की वैन नहीं आ रही है, तो वो अपने हस्बैंड को बोले कि यू हैव टू गो, आप उनको छोड़ दो, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ दो और फिर अपने ऑफिस पे जाओ। मिस्टर दीक्षित की आज ये बिल्कुल भी पोजीशन नहीं थी कि वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़े और उसके बाद जाए, बिकॉज सबसे पहले ही माइंड में वो थॉट दे चुके थे, आई एम लेट अगेन। वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे, उनको जल्दी पहुंचना था, उनको प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपरेशन करनी थी, मैनेजमेंट क्या सोचेगा, ये एक टेंशन थी। तो ये दोनों माइंडसेट जब इकट्ठा होते हैं, जब मिक्स होते हैं, तो एक झगड़े की शुरुआत करते हैं। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हम कैसे अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, ये बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है। उठते ही वी शुड थैंक गॉड कि हमें इतना अच्छा दिन मिला। हमें अपने खुद के लिए कोई अप्रेजिंग वर्ड्स बोलने चाहिए कि आई एम सो हेल्दी, आई एम सो फिट, आई एम सो फाइन, आई एम ऑल रेडी टुडे, आई एम स्टार्टिंग माई डे विथ एंथुजियाज्म, आई एम स्टार्टिंग माई डे इन अ हैप्पी मोड। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, आई एम लेट अगेन, वाई डिड आई डू दैट, मैंने ये क्यों किया, मैंने उसको ये क्यों बोला, मैंने उसको वो क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर वही क्या कहेंगे लोग वाली बात आ जाती है, तो वहां पर हमारी पेन अटक जाती है। तो ये एक पूरी स्टोरी मैंने ड्राफ्ट की, यहाँ पर इंजीनियरिंग बेस इसलिए लिया था ताकि चार्टेड अकाउंटेंट कोई भी खुद का पर्सनल ना गिने, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि
यही सिचुएशन हमारे साथ भी कहीं ना कहीं होती है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स मैंने देखे हुए हैं जो अर्ली इन द मॉर्निंग, समझो सुबह में जल्दी उठ के अपनी रूटीन प्रक्रिया खत्म करके 8 बजे 9 बजे जल्दी सबसे पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं, इफ यू आर बॉस। और फिर धीरे धीरे पूरे दिन आपका काम चलता है। कभी कभी हम शाम को याद करते हैं कि अभी तो ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, और फिर दिन खत्म होते होते रात के 8 9 भी आपको उसी ऑफिस में आपके ऑफिस चेयर पर बैठे बैठे दिन खत्म हो जाता है। और फिर आप जाके घर पहुंचते हो तो डेफिनेटली आपका फैमिली आपको पूरे दिन मिस कर रहा होता है। पूरे एक दिन के बाद आपके फैमिली को भी आपका टाइम चाहिए, एंड इफ यू आर इनटू प्रेशर ऑफ योर वर्क, तो फिर आप वो अपनी फैमिली, आपका जो फैमिली टाइम है वो भी आप एंजॉय नहीं कर पाते हो। सो वहां पर अगर ये मेंटल सिचुएशन आ जाती है तो मेंटल पीस की जगह एक प्रेशर बनता है, और वो धीरे धीरे डायलॉग्स पे डायलॉग्स, डायलॉग्स पे डायलॉग्स, और वो एक झगड़े में तब्दील होता है। सो as he entered his office, he found the file on his table that he had requested to his subordinate, Suresh Babu, to prepare comparative analysis report. अब तक मैंने बात की उनके घर में जो कुछ हो रहा था। अब मिस्टर दीक्षित ऑफिस पहुंच चुके हैं। ऑफिस में जैसे ही वो अपनी चेयर पर बैठते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने वही फाइल पड़ी है जो उन्होंने कल जाते जाते सुरेश बासु बासु को दिए थी एनालिसिस करने के लिए, और उसके बेस पर उन्हें कंपैरेटिव रिपोर्ट तैयार करनी थी, विच इज येट नॉट रेडी। He could not hold back his patience, shouted on Suresh, "Don't give me any excuse. Lack of discipline and sincerity of subordinates really frustrates me." घर से वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे, उनकी वाइफ के साथ वो ऑलरेडी झगड़ा कर चुके थे, उनकी बेटी को छोड़ने वो नहीं जा पाए थे। अब ऑफिस पहुंचते हैं और वहां जाकर भी एक फाइल जो उनके सामने पड़ी थी वो देखकर भी वो एकदम गुस्सा हो उठते हैं, और उनका जो सबॉर्डिनेट है सुरेश बासु, उन पे भी चिल्ला उठते हैं, "डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूज, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स रियली फ्रस्ट्रेट्स मी।" तो यहाँ पर इन्होंने और एक ऑर्डर दे दिया अपने माइंड को कि मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना है, और अपने स्टाफ के बारे में, अपने सबऑर्डिनेट के बारे में, इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके आर्टिकल्स के बारे में, आपके जो ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स है, तो आपने एक मेंटालिटी बना ली कि लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स रियली फ्रस्ट्रेट्स मी। तो मतलब आप अपने माइंड को ये ऑर्डर दे रहे हो कि मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, मेरे जो आर्टिकल्स हैं, वो ना ही डिसिप्लिन में रहते हैं, ना ही सिंसियर है अपने काम को लेकर। और अगर कभी कभी ये सिचुएशन आपके सामने दोबारा से आती है, रिपीट होती है, तो ये चीज, ये सिचुएशन, ये एक्शन आपको फ्रस्ट्रेट करता ही रहेगा, बिकॉज यू हैव ऑर्डर्ड योर माइंड कि लैक ऑफ डिसिप्लिन रहा, सिंसियरिटी अगर आपको नहीं दिखी, तो आपको फ्रस्ट्रेट होना ही होना है। तो ये पूरी जो भी एक एक्शन होता है, एक थॉट आता है, आपके सामने आता है, उसके बेस पर आप एक्शन करते हो, एक्शन आपका रिएक्शन बनता है। फिर मीटिंग शुरू होती है। ड्यूरिंग द मीटिंग दीक्षित ट्राइड हिज बेस्ट टू बी काम एंड पॉजिटिव। मिस्टर दीक्षित को प्रेजेंटेशन देना था। ही वॉज क्वाइट पॉजिटिव, काम रहते हैं। डेलीगेशन listened him patiently, though they asked some questions. At the same time, they were appreciative of his efforts and innovative. There is some technical issue. So we are coordinating with Linda ma'am. She will connect in a short time. So yeah.
Yeah, she's joining shortly. Vinda ma'am is joining shortly. Please stay online. Hello. Yes, am I audible? Yeah, I'm really sorry for the glitch. I'm starting it, yes. Yes, ma'am, you are audible. Okay, okay, I'm sharing my screen. Yeah. Is my screen audible now? Just wait, yeah, I'm really sorry. I guess this is like मेरे लिए एक command था कि how I'm handling the situation. So let's start from where we just stopped. So during the meeting, Dikshit tried his best to be calm and positive. Delegation listened him patiently. Though they asked some questions, at the same time, they were appreciative of his efforts and innovative ideas he had offered. They have given time for data and reports till next day. उनके जो डेटा रिपोर्ट्स आज नहीं बन पाए थे सुरेश बासु की वजह से उनके हिसाब से तो वो प्रेजेंट करने के लिए उनको कल के एक दिन का टाइम और दिया गया था सो आपको चाहे कुछ भी हो जाए बट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एक चीज होती है कि आप डेली अपनी रूटीन लाइफ पे क्या एक्शन लेते हो कैसे काम करते हो एंड सेकंड ड्यूरिंग द मीटिंग यू हैव टू बी काम
राइट। तो वो मिस्टर दीक्षित को पता था कि चाहे अपने घर से वो गुस्सा करके आए हो, चाहे अपने सबऑर्डिनेट पे वो गुस्सा कर रहे हो, बट ड्यूरिंग द मीटिंग ही हैज टू बी काम। उनको आराम से शांति से प्रेजेंट करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, एंड ही कैन नॉट आर्ग्यू देयर। प्रेजेंटेशन के टाइम पर, अपनी मीटिंग के टाइम पर वो ये चीज नहीं कर सकते। सो ऐसे ही कहीं ना कहीं हम भी इससे गुजरते हैं। हमारे घर पे, हमारे सबऑर्डिनेट पे, हमारे स्टाफ मेंबर पे हम चिल्ला देते हैं, बट जब बारी आती है कि हमें प्रेजेंट करना है अपने आप को, जैसे कि हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, वहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं हम सब के लाइफ में इससे हम गुजरते हैं। As he back to his office, mail notification was there. It was a company-wide announcement from CHRO at Munich headquarters. They appointed, now listen to this line very carefully. They appointed Mr. Dixit as the chairperson of grievance handling committee. उन्हें एक और पोजीशन ऑफर की गई थी एज अ हेड चेयरपर्सन ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग कमेटी। अभी जहां पर हमें कुछ और एक नई पोजीशन मिलती है, हम खुश होते हैं। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें इस काबिल गिना गया कि हम एज अ चेयरपर्सन यहाँ पर लीड कर पाए। लेकिन मिस्टर दीक्षित ऑलरेडी काम के प्रेशर में थे, ऑलरेडी उनका माइंडसेट फ्रस्ट्रेटेड था। तो उनके माइंड में क्या थॉट आता है ये आप देखिए, येट अनदर कमिटी एंड आई कैन नॉट से नो। वो ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभा रहे थे, और अब जब उन्हें एज अ चेयरपर्सन ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग कमेटी निमित किया गया, तो वो सोचते हैं कि अरे यार, और एक कमेटी मेरे अंडर में आ गई और मैं इसको ना भी नहीं बोल सकता। सो डियर मेंबर्स, कभी कभी टू से नो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। हर बार अगर आपको कोई बोलता है कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, इन द आइदर इन अ फैमिली ऑल्सो, कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, बट इफ यू आर थिंकिंग कि आई एम नॉट कैपेबल इनफ, या तो फिर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ करता हूँ या करती हूँ, मैं अब इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए, मुझे खुद के लिए भी टाइम चाहिए। तो टू से नो, NO, ये इतना छोटा सा वर्ड, पर ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी ना बोलना भी हमें आना चाहिए। सो ये एक पूरी कहानी थी मिस्टर दीक्षित की। आप जो समझ पा रहे हो कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान थे, फिर भी कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड रहते थे क्योंकि उनके ऊपर काम का बर्डन ज्यादा था। एक तो सेल्स डिक्रीज हुई थी, तो जो एक नेगेटिव परफॉर्मेंस है उसको भी उन्हें पार करना था। और फिर वाइफ के साथ झगड़ा होता है, अपने सबऑर्डिनेट पे वो चिल्ला देते हैं, प्रेजेंटेशन वो अच्छे से देते हैं, और फिर उनको नेक्स्ट डे का एक दिन का टाइम भी मिलता है। बट अगेन अगर वो उन्हें नई एक कमेटी मिलती है, ही वॉज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग कमेटी, तो तुरंत उनके माइंड में थॉट आता है, येट अनदर केस, येट अनदर कमेटी, एंड आई कैन नॉट से नो। मतलब कि वो, हाँ ठीक है, वो उन्होंने बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लिया ये पोजीशन, राइट, वो ना भी नहीं बोल पाए। सो यहाँ पर होता क्या है, एक इवेंट क्रिएट होती है, स्क्रीन पे देखिएगा, एक इवेंट क्रिएट होती है। इवेंट क्या क्रिएट हुई कि वो लेट उठे, उससे इमोशंस या तो थॉट्स आए, उनके माइंड में तुरंत ही आया, अरे आई एम लेट अगेन। ये एक अगेन वर्ड उनके माइंड को रीऑर्डर कर रहा है कि कल भी तुम्हें ये करना है। वो अपनी वाइफ से झगड़ते हैं, लास्ट में बोलते हैं, वाई आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब तुम हर रोज ही कंप्लेन करती हो। तो ये आमने सामने आपके थॉट्स शेयरिंग हो रहे हैं कि यू हैव टू कंप्लेन ऑलवेज, और फिर उसके बेस पर एक्शन आता है कि वो झगड़ा कर बैठते हैं। सेकेंड इवेंट हुई, वो ऑफिस गए, फाइल देखी, वो इवेंट हुई कि उनके सामने फाइल पड़ी थी। उनके माइंड में थॉट आया कि सुरेश ने अभी तक ये काम नहीं किया, और उन्होंने एक्शन लिया कि उसको बुलाया
और उस पे चिल्लाया कि मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं सुननी है, आप लोगों की यही बेदरकारी मुझे फ्रस्ट्रेट कर देती है। समझ रहे हो आप? ये पूरा एक जो इवेंट, इमोशंस, थॉट्स एंड उसको आप एक्शन में कन्वर्ट करते हो। सो मतलब कि जो इवेंट होती है दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। जो यहाँ पर आप देख रहे हो वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपके साथ क्या होना है। But yes, your emotions, your thoughts are in your control. That is internal. आप क्या सोचते हो, आपके माइंड में क्या थॉट आता है, आप क्या फील करते हो, कौन से इमोशंस आपके अंदर से निकलते हैं, दैट यू कैन चेंज, दैट यू कैन कंट्रोल। सो यू कैन रीथिंक और यू कैन चेंज। एंड देन जो आप रीथिंक करते हो, जो आप सोचते हो, उसके बेस पर ही आप एक्शन लेते हो। तो एक इवेंट हुआ और उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो what you can do is just take a 90-second pause. Just take a 90-second pause to change your thought pattern. Take 90-second pause before you act on your emotions based on the event. जो भी इवेंट होती है उसके बेस पर अगर आपको नेगेटिव थॉट आता है, नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सब अगर आप फील करते हो, यू हैव टू कीप योर माइंड जस्ट एकदम ब्लैंक, आंखें बंद करके 90 सेकेंड्स के लिए सिर्फ आपको एकदम शांत रहना है। तो ये जस्ट 90 सेकेंड का जो आप पॉज लेते हो ना, वो आपके थॉट को चेंज कर सकता है ताकि उसके बेस पर आपके एक्शंस चेंज हो पाए। On an average 47% वर्क वी आर डूइंग इज विथ माइंडफुलनेस, मतलब कि पॉजिटिव एक्शन लेते हैं एक दिन में। लेकिन 53% वर्क इज विथ एब्सेंट माइंड। हम मॉर्निंग में उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, हम ब्रश करते हैं। आज के बाद कल मॉर्निंग में जब आप ब्रश करो ना, नोटिस करना कि हमें कभी कभी पता भी नहीं होता है कि हम किस वे में राइट टू लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं, बिकॉज कि माइंडफुल से हम करते ही नहीं है। हमें पता है कि हर रोज मॉर्निंग में ब्रश करना है तो करना ही है, हाथ चल रहा है, माइंड में तो कहीं और कहीं 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 थॉट चल रहे हैं, आप पता नहीं क्या सोच रहे हो। और ब्रश कभी कभी हो भी जाता है ना, तभी भी हमें लगता है कि अरे मैंने किया था आज। ये होता है व्हेन वी आर टेकिंग बाथ, तो ऐसे ही बस ब्लैंकली, क्योंकि ये रोज की प्रोसेस है तो इसके लिए हमें माइंड अप्लाई ही नहीं करना होता है, तो हम विदाउट माइंड ये सारे काम करते हैं। लेकिन इफ यू आर टेकिंग बाथ और हम सोचते हैं माइंडफुलनेस वाइल टेकिंग बाथ कैसे ली जाए, आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी, मेरा बॉडी एकदम क्लीन हो रहा है, मेरे बॉडी में जो भी सारी थकान है मैं उन सबको दूर कर रही हूँ, नहाने के बाद मैं एकदम फ्रेश फील करने वाली हूँ। अगर हम ये ऐसे सोच के इफ यू आर टेकिंग बाथ, तो ये आपके पूरे बॉडी को एनर्जाइज करती है। लेकिन कभी कभी जैसे कि मैंने बताया, हमें पता ही नहीं होता है, बस हम जाते हैं, नहाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि ऑफिस में जल्दी जाने की वी आर ऑलरेडी लेट। ये कभी कभी हमारा माइंडसेट होता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है इन सब चीजों के लिए, बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, स्पाउस को टिफिन देना है, इन लॉज है उनको देखना है, सो लेट्स कंप्लीट अवर वर्क एज सुन एज पॉसिबल। तो कभी कभी अगर माइंडसेट ये होता है तो हम माइंडफुलनेस के साथ काम नहीं कर पाते हैं। ये जो सारी आपने इवेंट्स देखी जिसके बेस पर आपके इमोशंस और थॉट्स क्रिएट होते हैं, जिसके बेस पर आप एक्शन करते हो, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक साइकिल ऑफ बिहेवियर। आप जो भी बिहेव करते हो वो कैसे करते हो, वो कैसे आपका एक्शन आउटपुट आता है, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक साइकिल ऑफ बिहेवियर। इसको आपको याद रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको नेगेटिव एक्शन करने का मन करे ना, तो आपको याद करना है कि इवेंट क्या हुई, आपके माइंड में थॉट क्या आया, और उसके बेस पर आप ये एक्शन कर रहे हो। एंड इफ यू वांट टू चेंज योर एक्शन, तो आपको आपके थॉट पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, और थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए आपको माइंडफुलनेस पे आना पड़ेगा। एब्सेंट माइंड से आप ये नहीं कर पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये शायद बहुत डीप आप मान सकते हो, बट दिस इज वेरी रूटीन। हम रूटीन में ये चीज करते हैं लेकिन हमारा इस पे ध्यान ही नहीं होता है कि हमारे माइंड के साथ, हमारे दिल के साथ कैसे ये पूरा एक खेल खेला जाता है।
सो द थ्री पिलर्स ऑफ बैलेंस, हम इसी तीन पिलर्स के बीच में घूमते रहते हैं. फर्स्ट इज फैमिली एंड फ्रेंड्स, पर्सनल रिलेशनशिप, क्वालिटी टाइम विथ योर लव्ड वंस एंड सोशल कनेक्शन. ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है. विदाउट फैमिली, विदाउट फ्रेंड्स वी कैन नॉट सर्वाइव. आप चाहे प्रोफेशनली कितने भी हाई लेवल अचीव कर लो, लेकिन विदाउट फैमिली यू विल फील अलोन. और वैसे ही फ्रेंड्स भी अगर नहीं है साथ में, तो आपको वो एक चाम, एक मजा नहीं आएगा, राइट? सो 33% ऑफ अवर लाइफ इज फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सेकंड, हमारे लिए प्रायोरिटी रहती है वर्क. दैट मीन्स 33% ऑफ लाइफ वी आर स्पेंडिंग फॉर वर्किंग. हमारे प्रोफेशनल वर्क को हम बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं. तो हमारा फ्रेंड्स और फैमिली के अलावा जो दूसरा दिन, बाकी का दिन गुजरता है, वो ऑफिस में गुजरता है. प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेली डिलीवरेबल्स एंड गोल्स, क्लाइंट्स के हमें ड्यू डेट्स, जीएसटी ड्यू डेट्स, टीडीएस ड्यू डेट्स, इनकम टैक्स ड्यू डेट्स, इनकम टैक्स बिल आ रहा है, नया बजट आ रहा है. तो इन्हीं सब में हमें उलझे रहना पड़ता है. एंड दैट इज अवर ड्यूटी. वो वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें ये सब करना ही पड़ेगा. बट दिस इज वन पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड नॉट द ओनली लाइफ. ये हमें समझना पड़ेगा. बाकी 33% हमारा फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स है. संडे शुड बी फॉर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप आउटिंग कीजिए, मजे कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए. दिस शुड बी मस्ट, क्योंकि वर्किंग डेज में हम काम करते ही है. एंड यू नो कि हमारा 10 से 5, 10 से 6, कभी कभी 9 से 9, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था. तो मिनिमम 8 to 12 आवर्स हम ऑफिस में स्पेंड करते हैं. तो फिर फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना उतना ही ज्यादा जरूरी है. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अवर लाइफ, सेल्फ. फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, इन सबको बैलेंस करते करते हम कभी कभी खुद को भूल जाते हैं. खुद के लिए क्या चाहिए, आपकी खुद की डिजायर क्या है, आपको खुद को कैसे खुश रखना है. अगर फैमिली खुश हो गया तो आई एम हैप्पी. अगर मेरा स्टाफ मुझसे खुश है तो आई एम हैप्पी. अगर मेरे बॉस मुझसे खुश है तो आई एम हैप्पी. बट आर यू हैप्पी फॉर योर ओन सेल्फ? क्या आप खुद से खुश हो? आप आपकी पर्सनल ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन, क्या उससे खुश हो? आपका मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, आर यू फीलिंग योर हैप्पी, योर इनर पीस, योर अलाइनमेंट? तो ये सब आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है. द सेक्टर्स ओवरलैपिंग एट अ सेंट्रल पॉइंट, दैट इज जोन ऑफ बैलेंस. जहां ये 33% मिक्स करके आप यहाँ सेंटर में अगर अलाइन कर पाते हो, दैट मीन्स यू आर बैलेंसिंग योर लाइफ. when you're self aligned and emotions are stable, your professional output expands and family interaction softens. जब आप ये बैलेंस करना सीख जाते हो ना, तो आपकी लाइफ एकदम सही से ट्रैक पर है, ये आप बोल सकते हो. द फाउंडेशन ऑफ ट्रू सक्सेस, जैसे कि शुरुआत में मिस्टर मोहन दीक्षित ने बोला था, आई एम इडियट, व्हाट एन इडियट आई एम, राइट? आपको अगर याद है तो, इफ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल, नॉट द अदर वे राउंड. अगर आप खुश हो तो आप सक्सेसफुल हो, यस, ये आप बोल सकते हो. बट इफ यू आर सक्सेसफुल देन यू आर हैप्पी, ये होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है. मिस्टर दीक्षित के केस में अगर आप ले लो तो यस, ही इज सक्सेसफुल. हेड की पोजीशन पे थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो सबको सुना सकते थे, उन्हें किसी की सुननी नहीं थी. फैमिली था, बेटी थी, एवरीथिंग वाज सेटल्ड. नोएडा में घर था, जर्मनी में जॉब था, इससे ज्यादा आदमी को क्या चाहिए? ही इज सक्सेसफुल. बट कहीं ना कहीं हम देख पा रहे थे कि ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुद से खुश नहीं थे. इनकी अगर कोई, ये जो मिस्टर मोहन दीक्षित की स्टोरी है, एक्चुअली आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाई जाती है. इमोशंस का पूरा केस स्टडी है ये. तो मिस्टर मोहन दीक्षित की बाकी की लाइफ की भी बात करें ना, तो उन्हें जिम जाना बहुत ज्यादा पसंद था. लेकिन वो मॉर्निंग में जिम नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, उन्हें जल्दी ऑफिस पहुंचना था क्योंकि ऑफिस में काम बहुत था. तो मतलब कि खुद के लिए वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते. दूसरा, उनकी बेटी प्रिया, वो टेनिस खेलने के लिए हर रोज शाम को जाती थी टेनिस कोर्ट. कभी कभी मिस्टर दीक्षित के माइंड में ये चीज आती थी कि मुझे भी बहुत पसंद है स्पोर्ट्स, क्यों ना मैं भी प्रिया के साथ जाऊं. वो जाना तो चाहते हैं, बट 5 बजे क्या हम कोई भी अपने ऑफिस से निकल पाते हैं? नहीं.
तो वो चाहे, वो सोचे, अगर वो डिजायर है भी उनके माइंड में, पर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सो ये इनर पीस, सेल्फ हैप्पीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भी कभी ना कभी हमें टाइम निकालना चाहिए। योर इक्विलिब्रियम इज एन इंटरनल ऑडिट। हम बाहर का ऑडिट बहुत कुछ करते हैं, बाकी के बुक्स बहुत देखते हैं, इंटरनल कंट्रोल कर लेते हैं पूरे पूरी कंपनीज का, लेकिन इंटरनल ऑडिट जो खुद का करना है वो शायद हम छोड़ देते हैं। वो एक एरिया है जो हमारी नजरों से, हमारे ऑडिट से निकल जाता है। साइलेंट, सिंसियर एंड सेल्फ ड्रिवन, ये जो खुद के लिए पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाते हैं। फॉर दिस बैलेंस टू सस्टेन, टू एसेंशियल प्रिंसिपल्स दैट मस्ट गाइड यू। दो चीजें हमें एकदम याद रखनी है। नो सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को कभी भी गंदे शब्द नहीं बोलना है। खुद को कभी भी सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है कि मैंने ये क्यों किया। ठीक है, उस टाइम पे जो इवेंट थी, जो सिचुएशन थी, जो आपका मेंटल स्टेटस था, उसी हिसाब से आपने एक्शन ली, उसी हिसाब से आपने एक्ट किया, उसी हिसाब से आपने रिएक्ट किया। रिलीज हार्श जजमेंट्स अबाउट योरसेल्फ। सेल्फ कंपैशन क्रिएट स्पेस फॉर ग्रोथ एंड रेजिलियंस इन चैलेंजिंग मोमेंट। अगर आपको जिम जाना अच्छा लगता है, 1 घंटा आप आपके लिए निकाल सकते हो, तो वो मॉर्निंग में आपको एक रिफ्रेशमेंट, एक एनर्जी देता है। और अगर ये अच्छा लगने के बावजूद आप नहीं जा पाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको फ्रस्ट्रेशन देता है कि ये मुझे पसंद है पर मैं नहीं कर पाती। राइट? तो वो अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म फिर भी उस चीज में नहीं करना है। जो हो रहा है लेट इट बी। नो ब्लेमिंग अदर्स। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई, और कभी कभी होता है कि हमारा स्टाफ, हमने कुछ बोला, उनसे वो काम नहीं हो पाया। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, वो भी सीख रहे हैं, तो ये हमें समझना है। ये हम समझते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ब्लेम करते हैं। मेरा स्टाफ नहीं कर पा रहा, इसीलिए मेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को कोई जवाब नहीं दे पा रही हूँ। ये चीज शायद अब तो हम इतने ज्यादा सारी ड्यू डेट्स में उलझ गए हैं कि ये चीजें हर रोज हम फेस करते हैं। सो टेक ऑनरशिप ऑफ योर रिस्पॉन्सेज एंड चॉइसेस। आपको कौन से काम प्रायोरिटी पे करने हैं, कौन से काम ऐसे हैं जिसको आप आज अवॉइड कर सकते हो और कल पे उसको डिले कर सकते हो। सो टेक द ओनरशिप ऑफ योर रिस्पॉन्सेज एंड चॉइसेस। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज मे ट्रिगर, बाहर के इवेंट्स होते रहेंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दैट इज एक्सटर्नल इवेंट, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट योर इनर स्टेट डिटरमाइंस द आउटकम। आपका जो माइंड है, आपके जो थॉट्स है, आपके जो इमोशंस है, उसको चेंज आप कर सकते हो। दैट इज इन योर कंट्रोल। तो आपको खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। यस, आज ब्लेम करके आप उनसे बात करवा सकते हो, उनसे काम निकलवा सकते हो, बट रादर ऑन ब्लेमिंग, उनकी भी कोई परिस्थिति रही होगी, उनकी भी कोई सिचुएशन रही होगी, वो चाहते हुए भी ना कर पाए, ये भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हमें कैसे काम करना है, कैसे काम करवाना है, तो ब्लेम करने से तो कुछ भी नहीं होगा। रादर उनकी बात सुनो और फिर सॉल्यूशन निकालो। तो कंपनी पे, हमारे ऑफिस पे, हमारे सबॉर्डिनेट्स के साथ, हमारे कलीग्स के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, ये आउटर इवेंट से ज्यादा हमारे इंटरनल कंट्रोल पे, जो हमारे इमोशंस है, उस पे डिपेंड करता है। Breaking the automatic cycle. Professionals often operate in an unconscious loop, an automatic behavior cycle that runs without conscious approval. Mindfulness invites us to pause and insert awareness. जैसे कि मैंने बताया कि इवेंट होती है, इवेंट के बेस पर आपके इमोशंस और थॉट्स आते हैं और फिर आप एक्शन लेते हो। तो इवेंट्स क्या होती है? दैट इज एक्सटर्नल ट्रिगर अकर्स, अ कन्वर्सेशन, एक प्रेशर, एक्सेप्टेशन, एक्सपेक्टेशंस और डेडलाइंस दैट डिमांड्स योर अटेंशन। वो सारी इवेंट होती है। आपके आपके ऊपर प्रेशर क्या है, कोई आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सो दैट आर ऑल आउटर, वो सब बाहर है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने पोजीशन ली है, देन यू हैव टू डू योर वर्क, है ना? बट हाउ यू आर डूइंग योर वर्क,
आप वो क्या फील करते हो, किस सोच के साथ आप काम करते हो। आईसीएआई अगर आपको सीए मेंबर बना के आपको एक मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, दैट इज डिग्री टू अस। और उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स में रहकर, है ना। तो वो हम यहाँ पर भी एक नेगेटिव पॉजिटिव सारे काम होते हैं, राइट। बट क्यों हम एथिक्स को फॉलो करें, क्योंकि वो हमारे थॉट प्रोसेस है, वो हमारे इमोशंस है कि वी वांट टू गो एथिकली, वी वांट टू ग्रो एथिकली। तो वो हमारे इमोशंस है। अगर इसी को हम नेगेटिव लेते हैं तो भी हमारा काम हो सकता है, नेगेटिव वे से भी आप अर्न कर सकते हो। बट नो, व्हाई? बिकॉज कि वो हमारा इंटरनल मैटर है, हम क्या चाहते हैं, हमारे थॉट्स क्या है, और उसी के बेस पर हम एक्शन करते हैं। Emotions and thoughts are your internal response begins. If the emotional ladder is negative, thoughts spiral. If positive, the response stabilize. आप stabilized response करते हो. And finally, the action. Observable behavior emerges from the quality of those thoughts, verbal or physical responses that impact the final outcome. With mindfulness, response becomes strategic instead of impulsive. Professional judgment strengthen when we break the automatic cycle. और ये ऑटोमेटिक साइकिल को ब्रेक कैसे करना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। जस्ट टेक 90 सेकेंड्स पॉज। और आप क्या कर सकते हो इसके बारे में बात करते हैं। मिस्टर दीक्षित की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि वो अपनी बेटी के साथ टेनिस कोर्ट जाना चाहते थे, पर वो नहीं जा पाए। पर क्या उन्होंने कभी ये चीज बताई सही? माया उनकी वाइफ को ये लगता है कि आप तो ध्यान ही नहीं देते, इवन मैंने क्या ब्रेकफास्ट बनाया है, यू आर ईटिंग, यू आर ग्रैबिंग इट, आपको ये तक नहीं पता है कि आप खा क्या रहे हो। ये सिचुएशन होती है। तो कहीं ना कहीं अपने स्पाउस को, माया जी को ये फील हो रहा था कि मिस्टर दीक्षित इज नॉट पेइंग अटेंशन टू मी। वो अपनी बेटी को भी स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते, मतलब ही इज नॉट लविंग हर किड, हिज डॉटर। लेकिन अगर शांति से वहां पर मिस्टर दीक्षित ये बात कर पाते कि मैं छोड़ने जाना चाहता हूँ पर मैं आज बहुत टेंशन में हूँ, अगर वो बात कर पाते, पर कम्युनिकेशन गैप रहा क्योंकि उस टाइम पे भी ही वॉज बिजी इन हिज लैपटॉप, उनके ऊपर प्रेशर इतना था। अगर वो अपनी बेटी को भी बोलते कि बेटा आज मैं छोड़ने नहीं आ सकता, बट लेट्स डू वन थिंग, मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं उसको जल्दी से खत्म करने की ट्राई करता हूँ और आज शाम को 5 बजे तुम्हारे टेनिस कोर्ट पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर वो ये चीज अपनी वाइफ को भी बता पाते तो झगड़ा होता नहीं। वो समझ पाती कि ठीक है अभी टाइम नहीं है पर वो शाम को आएंगे, राइट। सो कम्युनिकेशन, द ब्रीच टू बैलेंस। एज अ वीमेन सीए मैं बताऊंगी कि कभी कभी हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आज मेरी एनिवर्सरी है तो मुझे विश करें, राइट। एज अ लेडी आई एम टॉकिंग टू यू, मेरी बर्थडे है तो वो कैसे बोल सकते हैं, लेकिन रात के 12 बज गए, उन्होंने नहीं विश किया। दिन में उठे, आप भी उठे, वो भी उठे, आप साथ में ही थे, उन्होंने विश नहीं किया, आपका गुस्सा बढ़ता जाता है। वो बोल कैसे सकते हैं, वो कैसे मुझे विश नहीं करते, राइट। वो जॉब पर चल जाते हैं, इवनिंग हो गई, थर्ड टाइम आप सोच रहे हो कि मुझे अब विश करे, अब विश करे, नहीं विश करते हैं, ठीक है वो भूल गए, ठीक है, आपका गुस्सा बढ़ता जाता है। रात के 11 बजे आप उनसे एकदम रुके रुके रहते हो, आपका मूड नहीं है, वो पूछेंगे आज क्या हुआ, तुम बात नहीं कर रही हो, तब जाकर आप रात के 10 बजे 11 बजे बताते हो कि टुडे इज माय बर्थडे और आप भूल गए। कैन यू थिंक कि अगर आपके पास भी तो मौका था बात करने का, आप रात को 12 बजे बता सकते थे, आप सुबह में उठ के बता सकते थे, आप बता रहे हो रात को 10 बजे 11 बजे। जब वो विश घर भी ले तो सिर्फ वर्बली विश कर पाएंगे, ना ही उस टाइम पर वो गिफ्ट लेने जा पाएंगे, ना ही कुछ और एक्सप्रेस कर पाएंगे, इज इट। अगर आपने सुबह में बता दिया होता कि आज मेरा बर्थडे है, आज हमारी एनिवर्सरी है, तो पॉसिबिलिटी है कि शाम को आते आते वो आपके लिए गिफ्ट ले आते, राइट। लेकिन कम्युनिकेशन गैप, वो पहले बोले मैं नहीं बोलूंगी,
कभी कभी ये ईगो हमारा बीच में आता है। सो इस टाइम पर कम्युनिकेट करना कि व्हाट इज इन योर माइंड। हम सब आत्मज्ञानी तो है नहीं, वो बाबा टाइप्स की। आपके माइंड में क्या है वो मुझे कैसे पता चलेगा? आप बोलोगे नहीं। इवन इफ योर हस्बैंड एंड वाइफ, अगर आपका बेटा है, आपकी बेटी है, यू हैव टू टेल हर। आपको बोल के बताना पड़ेगा कि दिस इज योर विश। वो भी आत्मज्ञानी तो नहीं है कि वो समझ जाएंगे कि आपके माइंड में क्या है। तो फिर क्यों सस्पेंस रखना है? लेट्स कम्युनिकेट ओपनली। बोलिए कि मैं ये चाहती हूँ। एंड वैसे ही जरूरी है कि ओपनली बोल दीजिए कि दिस शुड नॉट हैपन, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है, बट बताना पड़ेगा। सो कम्युनिकेशन, द ब्रीच टू बैलेंस, क्लैरिटी रिड्यूसेस अजम्पशन। आप अज्यूम करते रहते हो कि वो काम में होंगे, वो भूल गए होंगे, शायद उनको याद होगा पर वो शाम को मुझे सरप्राइज पार्टी देंगे। यू आर स्टार्टिंग अजम्पशन इन योर माइंड। बट अगर आपको पता है, देन बी क्लियर, बता दो सामने जाकर कि आज मेरा बर्थडे है, तो हो सकता है कि शाम को आपको कुछ सच में सरप्राइज मिले। Mindfulness penetrates our communication patterns, transforming how we connect with others, both personally and professionally. ऐसे ही कभी कभी ऑफिस में कुछ काम होता है, हम सोचते हैं कि ये तो उसको पता ही होना चाहिए, मेरे स्टाफ को ये तो उसे कर देना चाहिए था। लेकिन अगर आपको पता है कि वो नहीं कर पाएगा या फिर उसको बताना पड़ेगा, तो बता दीजिए ना। क्यों हम वेट करें कि वो, उसको पता होना चाहिए, वो करेगा, और अगर फिर वो ना करे तो आपको गुस्सा आए? क्यों इतनी सब राह देखनी है? एक्सप्रेस ओपनली, डू नॉट हेजिटेट टू कम्युनिकेट योर थॉट, स्पेशली टू फैमिली। क्लैरिटी प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स। नेक्स्ट इज लिसन माइंडफुली। अगर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, we should listen mindfully. When love and respect are expressed with awareness, relationships strengthen in all the areas of life. सुरेश बासु, उन्होंने रिपोर्ट नहीं बनाया, लेकिन एक बार मिस्टर दीक्षित की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पूछे कि कल रात को अगर मैं बता के गया था कि यू हैव टू एनालाइज दिस फाइल एंड यू हैव टू प्रिपेयर द डेटा, यू हैव टू प्रिपेयर द डेटा एनालिसिस, तो वो क्यों नहीं हुआ? कुछ तो कारण होगा, है ना? बट नहीं, सुनना ही नहीं है, और हम चिल्ला देते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, आप गैर जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते नहीं हो। तो मतलब हम हमारे माइंड का जो स्टेटस है ना, वो उनके ऊपर थोप रहे हैं। पर उन्होंने क्यों नहीं किया ये तो हम सुनने को ही तैयार नहीं थे। सो वी नीड टू लिसन माइंडफुली एंड टू बिल्ड द ब्रिजेस। Balanced communication elevates both personal harmony and professional collaboration. So communication is very, very, very important. अंडरस्टैंडिंग द डोपामाइन कर्व। डोपामाइन ये वर्ड अगर आपने कहीं सुना हो तो इसके बारे में मैं बता दूं। हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, वो जो क्रिएट होते हैं, इसको एक साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं डोपामाइन। अगर मुझे आज चॉकलेट खाने की इच्छा है, ठीक है, मैं नहीं खा पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में चलेगा मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है। और जब मैं चॉकलेट खाऊंगी ना, एक सेटिस्फेक्शन मेरे माइंड में आएगा, राइट? तो एज पर इमोशनल टर्म उसको मैं बोल सकती हूँ कि आई एम सेटिस्फाइड विद द चॉकलेट आई हैव हैड। और उसको अगर मैं साइंटिफिक टर्म में बोलूं, सो योर डोपामाइन इज सेटिस्फाइड। होप यू अंडरस्टैंडिंग। प्रेग्नेंट लेडी होती है तो हम कभी कभी बोलते हैं, राइट, कि उसको खट्टा खाने की इच्छा होती है। मतलब कि डोपामाइन लेवल जो उनके बॉडी में है वो कम हो रहा है। जैसे ही वो कुछ खट्टा गाय खाएंगे, डोपामाइन लेवल इंक्रीज होगा और वो सेटिस्फेक्शन लेवल एक आ जाएगा। ठीक है, जिसको भी गंदी लत लगती है, अगर वो ड्रिंक की हैबिट है, तो जब तक वो ड्रिंक ना कर ले तब तक उनकी बॉडी में डोपामाइन क्रिएट नहीं होता है। दिस इज साइंटिफिक टर्म। तो इसका मतलब है कि एक हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो हमारा बेस लेवल है। अगर आप ये ग्राफ देख रहे हो, 80 इज योर बेस लाइन। 40 जहां से ये पॉइंट शुरू होता है, वहां पर आपकी कोई एक डिजायर है,
आपको करना है, करना है, करना है, करना है, आप सोच रहे हो। बैलेंस्ड लाइन से ऊपर जाता है, दैट मीन्स नाउ यू नीड टू सेटिस्फाई योर हंगर। अगर आपको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, आप बेर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर बिलो बेस लाइन। आप जब वो सेटिस्फाइड करते हो तो आपका डोपामाइन कर्व हाई पे जाता है, मतलब कि यू आर सेटिस्फाइंग योर क्रेविंग्स। आप आपकी जो भी डिजायर है उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। 80 से अब जो भी लाइन आप देख रहे हो, ये डॉट, दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइंग योर डोपामाइन। लेकिन अगर मैं 80 से बिलो जाती हूँ और 40 से अगर मैं डाउन जाऊंगी ना, हम कभी कभी सोचते हैं कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, या तो फिर अब आज के टर्म में आता है कि वो एकदम डिस्ट्रेस्ड, मतलब एकदम स्ट्रेसफुल रहते हैं। क्या बोलते हैं कि वो एकदम सुसाइड करने वाली पोजीशन जो आ जाती है, कि कहीं कुछ उन्हें समझ में ही नहीं आता है। दैट मीन्स कि उनकी थॉट प्रोसेस एकदम स्टॉप हो चुकी है और उनका जो मेंटल स्टेट है दैट इज बिलो बेसलाइन। डोपामाइन क्रिएट ही नहीं हो रहा है बॉडी में, तो वो कैसे सेटिस्फाइड करे। उन्हें कुछ भी खुश करने वाला, कुछ जो करना चाहिए वो करने की ही उनकी इच्छा नहीं हो रही है। उनकी बॉडी में डोपामाइन इतना ज्यादा कम हो चुका है, राइट। हमें कुछ भी डिजायर है, अगर हम वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं और अगर हम एक बिलो लेवल बेस लाइन से भी नीचे चले जा रहे हैं कि हमारा वो सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं रहा है, तब स्ट्रेस क्रिएट होता है और तब माइंड में फिर सुसाइड करना है या फिर नो वन इज लिसनिंग टू मी, तो ये सब एकदम नेगेटिव थॉट्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर फैमिली एंड वर्क सब कुछ एक साथ अफेक्ट करना है। आप कंपनी पर हो, आप काम कर रहे हो, आप आपके ऑफिस में हो, लेकिन आपको सबकी जो नेगेटिव है ना, नेगेटिविटी वही दिखेगी। देखिए तो सिर्फ बैठा ही रहता है, ये काम नहीं करता, वो तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है, उसको तो कोई पड़ी ही नहीं है। तो ये सारे थॉट्स माइंड में आते हैं। घर पे जाओ तो ये रहता है कि आज पता नहीं खाना क्या बनाया, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है ना। अगर वाइफ ने इसी पोजीशन पर बहुत चाव से एकदम आपके लिए सोच सोच के अच्छा बना के रखा होगा ना, तो भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, बिकॉज यू रियली नीड योर डोपामाइन टू इंक्रीज। माइंडफुलनेस टीचेस अस द बायोलॉजिकल ट्रूथ बिहाइंड अवर इमोशंस। हमारे जो इमोशन है उसका ट्रूथ क्या है, क्यों हम ये फील कर रहे हैं। अगर माइंडफुल होना शुरू हो जाएंगे तो हमें ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। Every action creates a neurochemical response that affects our happiness baseline। जैसे कि मैंने बताया, जो एक बेसलाइन है, अगर उससे ऊपर आप जाते हो मतलब यू आर सेटिस्फाइंग योर हंगर, यू आर सेटिस्फाइंग योर डिजायर, और बेसलाइन के भी अगर नीचे गए तो फिर आप एकदम स्ट्रेस फील करते हो। Every high is followed by deep. When dopamine dips too low, happiness drop। एकदम अगर आपके डोपामाइन का लेवल कम होता जा रहा है बॉडी में साइंटिफिकली, तो आप बिल्कुल भी खुशी फील नहीं कर पाते हो। इफ द ड्रॉप इज कंसिस्टेंट एंड इग्नोर्ड, इट लीड्स टू टुवर्ड्स इमोशनल फटीग और अर्ली डिप्रेसिव टेंडेंसीज। डिप्रेशन में है, जब ये वर्ड को यूज करे ना, तो अब से आपके माइंड में आना चाहिए कि मतलब कि इसकी बॉडी में डोपामाइन कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है, और फिर उसको ओवरकम कैसे करें। हेंस mindful practices help stabilize the curve, preventing emotional volatility. To naturally elevate your dopamine and maintain a steady happiness life line, engage in sports। जितना दौड़ते हैं, भागते हैं, स्पोर्ट्स, आपको टेनिस अच्छा लगता है, आपको पिकल बॉल खेलना अच्छा लगता है, तो एंगेज योर सेल्फ। दिन की एक 10 मिनट के लिए आप दौड़ पे निकल जाइए। अगर आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ खेलिए। तो मतलब अगर कोई डिप्रेशन में है ना, तो उनको जो अच्छा लगता है, जो उनकी बॉडी में डोपामाइन लेवल को क्रिएट कर पाए, ऐसी एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पोर्ट से आप इंक्रीज कर सकते हो। म्यूजिक, अगर किसी को डांस करना अच्छा लगता है, अच्छे गाने सुनना अच्छा लगता है, कभी कभी पता है अगर हमें टेंशन भी होता है और हम हमारा कोई फेवरेट सॉन्ग सुन लेते हैं तो हमें मजा आ जाता है कि वाह यार मजा आ गया, उसके लिरिक्स सुनकर ही ऐसे खुशी हो जाती है ना। सो दैट मीन्स दैट सॉन्ग इज इंक्रीजिंग योर डोपामाइन लेवल।
सो स्पोर्ट्स कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, मेडिटेशन, उससे आप आपके मेंटल स्टेटस को स्टेबल कर सकते हो। एंड माइंडफुल हॉबीज, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, डॉट आर्ट करना अच्छा लगता है, तो आपको जो भी हॉबी है, आपको पोएम लिखना अच्छा लगता है, इफ यू आर अ पोएट, आपको कुछ शेरो शायरी करना अच्छा लगता है, तो फैमिली को बोलिए कि नहीं बैठो, मुझे शायरी बोलनी है, आप सुनो। कभी कभी पागलपन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी चीजें जहां पर आप खुद को एंजॉय करते हो, आप खुद को हैप्पीनेस फील करवा सकते हो, दिस आर नॉट लूजर, दे आर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड विच इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। अगर हम खाते भी हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हम हाथ से खाना उठा रहे हैं, वो मुंह में जा रहा है, उसका एक बाइट आप ले रहे हो, वो आपके सलाइवा में इंक्रीज कर रहा है, आपके स्टमक तक वो कैसे पहुंच रहा है। कभी कभी हम खाना भी एकदम माइंडलेस खाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता, जैसे कि मोहन दीक्षित के केस में हमने देखा कि उसकी वाइफ सामने बैठी है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बट लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन हर एक चीज हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, अगर ये सब कुछ माइंडफुलनेस से करें तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा चार्ज्ड होता जाएगा। हमें हर रोज अब आदत आदत पड़ गई है रात को सोते टाइम या तो उठते ही पहले मोबाइल को चार्ज करना, लेकिन ये मोबाइल को चार्ज करना जितना जरूरी है ना, उतना ही ज्यादा जरूरी है हमारे माइंड को चार्ज करना। सो आई होप कि आप यहाँ पर बहुत कुछ सीखे हो, और मिस्टर मोहन दीक्षित के केस से भी आपको एक रियलिटी चेक मिली हो कि हमें कैसे हमारे बाहर के आउटर इवेंट के बेस पर हमारे थॉट पैटर्न को चेंज करना है, और उस हिसाब से हमें एक्शन करना है। सो हाउ यू कैन कंट्रोल योर एक्शंस। प्रोफेशनल बेनिफिट, आप डिसीजन मेकिंग अच्छा कर पाओगे, इमोशनल रेगुलेशन होगा, क्लाइंट रिलेशनशिप अच्छे होंगे, लीडरशिप प्रेजेंस, आपका फैमिली, ये सब आप एक साथ बैलेंस कर पाओगे इफ यू आर माइंडफुली रिएक्टिंग। योर कमिटमेंट टू माइंडफुल एक्सेलेंस, a mindful professional is an unbeatable professional. Let us commit to living in the present with clarity, with balance, and with awareness. आप जो भी करो आपको पता होना चाहिए what you are doing and how you are doing. And even if you want to change that event, then how you should act. याद रखना, आज के बाद आप ये भूलने नहीं चाहिए कि इवेंट है, थॉट पैटर्न है, इमोशंस है, और उसके बेस पर आपके एक्शंस होते हैं। चेंज करना है तो 90 सेकेंड पॉज इज वेरी वेरी एसेंशियल। और अगर डोपामाइन लेवल आपको लगता है कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप अगर डिप्रेशन में जा रहे हो, तो डू वॉट एवर गिव्स यू हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस आपको जो दे, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, मेडिटेशन हो, आपकी कोई अच्छी हॉबी हो, तो वो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज सी वृंदा वखारिया साइनिंग ऑफ। वृंदा स्पिक्स करके मेरा इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लेट्स टेक एनी क्वेश्चंस इफ। Um, Thank you so much, Vrinda ma'am, for your insightful and engaging presentation, and further emphasizing the importance of work-life balance and mental health in our everyday routine. Further, let's open the floor for questions. We have one question from Vibhuti, who's from Mumbai. She says, how to balance dopamine in kids who suck the thumb, or which activity will reduce the tendency? How to balance dopamine? In kids who suck the thumb, or which activity will reduce the tendency? ओके फाइन। सबसे पहले तो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कितने साल का है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर थंब वो लेता है ना हाथ में, तो मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी उसकी डिजायर है, उसकी मेंटल स्टेटस ये है कि ही नीड समथिंग, बट वो उसे नहीं मिल रहा है, तब बच्चा मुंह में लेता है। अगर कोई टेस्ट उसको ये है और वो माइंड में मतलब थंब मुंह में ले रहा है, इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा सोच रहा है। इन दैट केसेस यू नीड टू डाइवर्ट हिज माइंड। आपके बच्चे का माइंड कोई अच्छी एक्टिविटी में डाइवर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ढूंढना होगा, अगर वो बहुत छोटा है 1 से 3 साल के बीच में, तो उसको पोएम्स में,
फिर एक्टिविटीज में स्टोरीज सुनाकर आप उसके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो। और अगर उससे बड़ा है तो उसके लिए आप सोचिए कि कौन सी एक्टिविटी उसके है, टोकेंडो में डालिए। अगर उसको ड्राइंग पसंद है तो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज होती है। फिर आपके यहाँ अगर डांस, अगर उसको डांस पसंद है तो डांसिंग के क्लास में आप उसको एनरोल करवा सकते हैं। मतलब कि उसके माइंड को वो सोचना थोड़ा कम करे और बॉडी को एक्टिवेट करे, तो धीरे धीरे जो ये हैबिट है वो रिड्यूस होती जाएगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Any other questions, anyone? Let's just wait for a minute, maybe if someone is. Yeah, it's already 5-1. So Yeah, it's already 5. So thank you for your for this wonderful session, CA Vrinda ma'am, and also my sincere gratitude to all of you, the audience, for taking time to join the session and making it successful. Thank you. thank you so much. Thank you so much, everyone.